अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिबरल ह्यूमनिज़्म थ्योरी को। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रिसोर्सेज या सोर्सेज मेरे अच्छे लगते हैं तो इनको काइंडली शेयर कर दिया करें। जितना हो सके उतना शेयर किया करें। आप लोग तो इसको ना शेयर करते हैं ना अच्छे से देखते हैं, सिर्फ 50 to 60 व्यूज़ आते हैं। तो मैं भी डिसहार्ट होती हूँ ये चीज़ें देख के। तो काइंडली आप लोग जितना हो सके एज़ मच एज़ यू कैन शेयर द वीडियो एज वेल। ठीक है, वीडियो लास्ट में शेयर किया करें। कम टू द पॉइंट, लिबरल ह्यूमनिज्म थ्योरी, ये मैंने एज इट इज़ थ्योरी लिखी हुई है। आपको अगर अच्छी लगे तो इजी वर्डिंग में है काफ़ी, तो आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। लिबरल ह्यूमनिज्म इज़ अ philosophical and literary movement in which man and his capabilities are the central concern. The study of human is called humanism, also a system of thoughts that consider solving human problem is more than religious belief. A German scholar, George, in 1856 used this term to describe the Renaissance humanism. Humanism term derived from the word humanity, that is a concept taken from humanistics by Marcus. उसके बाद आपने देखना है, some critics says Martin was not a humanist, but some believes on his humanism. He thought against priest. आप लोग ये जो 2 लाइनें मैंने पढ़ के सुनाई है ना, इसको आप लोग कट कर दें। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस थ्योरी रिजेक्ट्स लाइफ। अच्छा, ये थ्योरी जो थी वो लाइफ रिजेक्ट करती थी, ज़िंदगी को। लाइक आफ्टर डेथ के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है उसको ये रिजेक्ट करती थी। एंड फोकस ऑन सीकिंग हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड। लिबरल ह्यूमनिज्म रिजेक्ट्स एनी काइंड ऑफ सुपरनेचुरल पावर। सुपरनेचुरल पावर जो भी थी उसको भी ये रिजेक्ट करती थी। लिबरल ह्यूमनिज्म थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 19th century. F.T. Morris introduced liberal humanism in literature in 1840. This theory was not attacked by some theorists such as Marxism and feminism beginning in the 1960s. Universe needs man and man doesn't need universe. ये liberal humanism का कहना था। Humanism shows the importance of human values and dignity. It focus on the fact that people can resolve problems through science और reason. ये इस चीज़ पे फोकस करती थी कि साइंस और रीज़न के ज़रिए पीपल अपने जो हैं मसले हल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। Rather than looking to religious traditions, humanism focus on helping people lives well, achieve personal goals, and make the world a better place. John Locke, commonly known as the father of liberal humanism. Liberal humanism has its roots at the beginning of English studies in the early 18s and became truly famous between 1930 and 1950. It was attacked by theories such as Marxism and feminism beginning in the 1960s. अच्छा, आपको समझ लग रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। कहीं पे भी आपको मेरी समझ नहीं लगती तो आप लोग हाईलाइट कर दिया करें कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई लास्ट में किया करूँगी। The study of liberal humanism is finds meaning within the text itself. अच्छा, 10 मेन टेंट्स थे इसके, 10 मेन प्रिंसिपल थे लिबरल ह्यूमनिज्म के, जो ये हैं। ठीक है, द 10 मेन प्रिंसिपल ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म आर एज फॉलोज. द फर्स्ट वन इज good literature is timeless. It is not for an age but for all time. Good literature is timeless, boundless and speaks about what is constant in human nature. Then फिर इनका जो सेकंड पॉइंट था वो था literary text contains in its own meaning, not in a historical context or autobiographical context. The third one is text studies in isolation without seeing or focus on any background, just to close reading without focus on outside material. Human nature is unchanging, continuously valued over innovation. Human nature cannot be changed. Individuality is essence, focus on external subjects, different forms, social, experimental and linguistic forces. Purpose of literature is to enhance life in a non-pragmatic way, live, laugh beautifully. In literature, form and content naturally blends together. Text must be beautiful, it must be wording from common and dramatic language, which eliminates the gap between words and objects. Showing value over telling, act matters a lot in ideas. Text should be understood by criticism free from theory and beliefs. Instead, it should rely on a text that is direct, based on reality, sensory contexts. Main characteristics of liberal humanism was man is more important than religion. आदमी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, रिलीजन को कम.
देयर इज़ नो गॉड, वो कहते थे देयर इज़ नो गॉड, अस्तगफिरुल्लाह, एंड मैन इज़ फ्री, मैन इज़ सुप्रीम, दे बिलीव इट इज़ पॉसिबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ विदाउट रिलीजन. Liberal humanism reject any kind of supernatural power, don't follow the holy books either, they believe that they have a duty to support others. इसको छोड़ दें आगे, रिकरेंट आइडियाज इन थ्योरी, इसको भी छोड़ दें, ये सारा आप छोड़ दें. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स पे आए, फिर आपने ये लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स इन द थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म आर एरिस्टोटल, सिडनी, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, कीट्स एंड शेले. वर्क्स ऑफ जॉर्ज Matthew Arnold Henry are played major roles. Eliot's idea of poetics, impersonality expressed in tradition and individual talent, anti-romantic sense of tradition speaking through and transmitted by the poets, finally concludes that politics is everywhere. Language have a power of construction. Truth is tentative. Meaning is dependent or continued by something else, change with the period of time. Meaning based on circumstances. Human nature is a myth. So I'm done this video. ये हमारी एक लिबरल ह्यूमनिज्म थ्योरी जो है वो हो चुकी है. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.